फाइनली हम पहुंच चुके हैं खेड़ेगांव एंड एज आई टोल्ड यू ऑल इन द प्रीवियस व्लॉग ऑल्सो टू 2023 by the way, the same place, and this is our room 13. Last time we were in 12 when I had come with mom. इस बार 13 रूम पे आए हैं एंड उनका दर्शन देता हूँ मैं आपको, लेकिन खाना खाने के बाद, क्योंकि I'm damn hungry right now. From morning I had little bit of pud, what we call pud. So वो नाश्ता किया था हमने, लेकिन बीच में कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है. So after having lunch I'm going to come back. तो हम पहुंच गए थे 2:45. तो we left at around 6:15. इसके बाद हम पहुंच गए 9:15 को खानापुर. तो हम अभी बैठे हैं खाना खाने के लिए और सब परोसा जा रहा है इधर. इधर हमारा लंच. बैठ. अब खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं मोटू बसवन्ना की तरफ. सो दे आर ऑन द वे एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर देम टू कम एंड लीव फ्रॉम. तो ये है मोटू गणपति. सो खेड़ेगांव मेन टेम्पल इज ओवर देयर एंड दिस इज द हाईवे. नॉर्मली we come from this side, there is another route over there, so इधर से भी आ सकते हैं, उधर से आ सकते हैं. and this is the Motu Ganpati. We have just parked our car over here. Normally we used to come by walking. It's the first time we come by car because we have a car right now. तो normally evening को चल के आते थे और ऐसे chill करते थे. and you can see the stones, and I think I have mentioned already before, like they say that if you lift this and lift the stones and if you wish for something it will become true. Do you all believe that? The sad part is that हम इतना भक्ति करते हैं भगवान के लिए that when it comes to keeping it clean we are not that much. Look at this. Okay, the temple is there and all the dirt and all the plastic, all the paper plates, cups, everything is fallen over here. तो अब हम आ गए हैं शिवलिंग टेम्पल विच इज़ नियर टू अ स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम. तो कहते हैं कि इधर से पानी लेके हमको बसवन्ना की तरफ. सो दे टेक दिस स्ट्रीम वाटर एंड दे डू बसवन्ना का अभिषेक. It is quite deep over here, as 2 years back when I had come everything was dried. So but now as it's raining continuously, everything is full. तो मैं अभिषेक के बारे में बोल रहा था, वो पानी इधर से लेते हैं. So this is a well and inside the well the water is there. From here they take the water and they do abhishek. And this is the stream I was talking about. इधर से पानी जब हाइट होता है तब उधर से पानी उस तरफ चला जाता है. तो उधर हमने पार्क किया है एंड दिस इज़ अ प्लेस एंड शिवलिंग इज़ देयर ऑन टॉप. इट्स रेनिंग राइट नाउ बट स्माइल इट्स नॉट दैट हैवी रेन. तो अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पानी गिरता है वो, एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज़ वेयर द वेल इज़. And if you all can see over here, a snake. I can see a snake over here. God, look at him. And see where he's right near the dam where the water is not going.
such a cute one. Such a cute one. ने लिया है ऑयल उधर डालने के लिए दीपोत्सव। अब सब वेट कर रहे हैं आरती के लिए। सो ऑल आर वेटिंग फॉर द आरती। सो पूजा हो रहा है, अब आरती के लिए सब वेट कर रहे हैं। तो हमने लगाया इधर दीप आरती के बाद। अब मैं जा रहा हूँ इधर ऊपर क्योंकि इधर दे प्ले इंस्ट्रूमेंट ओवर है इन द इवनिंग। And the best part is there are a lot of things over here which we can rent it for. Like I'm taking this two things and we can rent it for means you can give whatever value whatever amount you want to give, as it will go for the donation for the charity work for the temple. And there are a lot of things over here to rent. All the utensils, everything is here to rent. So no need to buy anything, everything will be getting over here only. तो अब हम बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री ऑफ खिलेगांव. A farmer named Davalappa lived in Khilegaon, tended cattle and fields, and noticed one of his cattle repeatedly going to a snake's hole and pouring milk into it. One night, Davalappa dreamed that the cow's action signified something divine. The voice told him to dig the snake's hole and he would find a deity there. On digging, Davalappa and his wife found a shiny idol of Basavanna.
in that hole. They installed it in their field and started worshipping it with water drawn from the nearby river, Agrani River. Word spread, devotees flocked to the site, and with community support, they built the temple. The temple performs daily pujas using water from the Agrani River. A Palki Utsav is held every Monday evening. Major festivals, the New Year, Yugadi, and Shravana months attract large crowds. The temple serves free food to devotees. We really had a great time coming here.